So today we will talk about fundamental duty. Right. Today is October. क्या है आज? 26. So today we will talk about fundamental duty, right? And if you see fundamental duty, that has been inserted by the 42nd Constitutional Amendment Act. The original constitution had no fundamental duty, right? And if you look at during emergency, Indira Gandhi government basically set up a committee headed by Swan Singh, and the Swan Singh committee recommended 8 fundamental duty, including duty to pay tax, and also to make duty legally enforceable, right? That was a provision recommended by Swan Singh committee, right? So you must remember Swan Singh committee, right, that recommended 8 fundamental duty, right? 8 fundamental duty, including duty to pay tax. Okay, and it also recommended duty, right, that is duty to pay tax, and it recommended that fundamental duty should be legally enforceable, right? ये चीज 2 चीज याद रखना, right? It recommended 8 fundamental duty, including duty to pay tax, right? And it also recommended that fundamental duty should be legally enforceable, right? FD should be legally enforceable. What does it mean? In case of failure of performing fundamental duty, one should be punished. That is so simple. Now, if you look at the 42nd Constitutional Amendment of 1976, it inserted, basically Article 51A in the Part 4 of the Indian Constitution, and it talked about, basically it recommended 10 fundamental duty, right? So you had 10 fundamental duty, right? For example, duty to respect national anthem, national emblem, right? National heritage. Okay? Now, to protect India's sovereignty, integrity. Okay? Then also, promote scientific temper, right? To promote communal harmony, right? To respect women, right? So there are 10 fundamental duty, and I had told you that to make the list of it. Did I say last class? DPSP. Now you make that all, the list of the all fundamental duty, and then look into it. Okay? And if you see 86th Constitutional Amendment Act, CAA, added one more fundamental duty. So altogether you have how many fundamental duty? 11 fundamental duty. 11 fundamental duty. And fundamental duty is not legally enforceable. It is not legally enforceable. Yeah, it is not legally enforceable. What happened in 1999? The Vajpayee government, set up a committee headed by J.S. Obama to look into whether fundamental duty can be legally enforceable or not. ठीक है? कब हुआ ये? 1999 में. In 1999, if you look at, Verma committee had been वर्मा कमेटी बनाया गया. वर्मा कमेटी क्यों बनाया गया? राइट, ताकि अगर हम फंडामेंटल ड्यूटी को लीगली एनफोर्सेबल बनाएं या ना बनाएं.
Now, Burma committee recommended that look, we have already several law, right, which punishes the people in case of violating, certain things, and which is enshrined in the fundamental duty. Now, for example, you have, National Honor Act 1972, right? For example, what you have? National Honor Act 1972. Now, basically, this law punishes a person if you dishonor national emblem, national anthem, and so on and so forth. Then you have Civil Rights Act. Civil Rights Act 1955. Right. That is punishable in case of caste-led violence or caste-less kind of discrimination. Then you have also several acts. For example, you had, you know, uh, protection of women from sexual harassment at workplace, right? So there are already law which punishes in case of the violation of the fundamental duty. So don't make it, legally enforceable. So if you see fundamental duty, it is not legally enforceable. However, there are several law, right? And if we violate, then law can apply. Okay? Now, as far as this fundamental duty is concerned, we have borrowed from USSR. We have borrowed from USSR, and if you see the Western democratic countries, no democratic country in the Western world has fundamental duty. No, not a single country, whether US or Britain or France or Germany, right? Now, if you look at fundamental duty, duty something is a essential element of the fascist regime. It is a fascist regime which focuses more on duty than the rights. राइट वो ये नहीं पूछता कि आपके अधिकार क्या है, वो इस पे फोकस करता है कि आपके ड्यूटी क्या है. ठीक है, तो आप देखेंगे कि फंडामेंटल ड्यूटी बेसिकली इज अ एसेंशियल एलिमेंट ऑफ द authoritarian government, not the democratic government. And this is why if you look at not a single country of the Western world which is democratic, have no fundamental duty, right? In Asia, yeah, there are two countries which has fundamental duty. Now, if you look at the constitution of Japan, has fundamental duty. The constitution of Sri Lanka has fundamental duty, right? Rest, no country, democratic country in the world, has fundamental duty in their constitution, right? So as I have already told you in the last class also, other than India, yes, Japan has fundamental duty, Sri Lanka has fundamental duty in their constitution, right? USSR has fundamental duty. We have borrowed fundamental duty basically from USSR. हमने USSR से borrow किया है ये आइडिया. अच्छा, टोटल नंबर ऑफ फंडामेंटल ड्यूटी कितना है? 11 फंडामेंटल ड्यूटी है हमारे पास, राइट? जो 10 फंडामेंटल ड्यूटी आया है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से, एंड 86 से एक और फंडामेंटल ड्यूटी ऐड हुआ है 2002 में. दैट इज एवरी सिटीजन हैज फंडामेंटल ड्यूटी टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू देयर वर्ड फॉर एजुकेशन फ्रॉम 6 to 14 years. 6 से 14 साल तक, 6 से 14 साल तक अपने बच्चे को, अपने वार्ड को आप पढ़ने का मौका जरूर देंगे. ये फंडामेंटल ड्यूटी है, ठीक है? तो फंडामेंटल ड्यूटी में बस इतना है और ज्यादा है नहीं, ठीक? नाउ नेक्स्ट आई विल टॉक अबाउट द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, or basically amendability of the constitution, how constitution is amended. Now let me move to the amendment to the constitution.
amendment of the constitution, right? Now if you look at article 368 of the Indian constitution, empowers the parliament to amend the constitution. Which article? Article 368. If you look at Indian constitution, it is a dynamic. Indian constitution is a living document. Indian constitution is a living document. It is not dead. It is not a static. It is very much dynamic. It can be changed according to time and circumstances, right? If country requires, the parliament can change the constitution, right? Now, and for it, article 368 has been kept in Indian constitution, and it empowered the parliament to amend the constitution, right? Now if you see parliament, right? Now what do you mean by amendment? Amendment का मतलब क्या है? Amendment का मतलब है simple change. Amendment का मतलब क्या है? Change. Now what do you mean by change? Change means addition. कुछ आप add कर सकते हो, right? Deletion, right? Alteration, moderation, right? ये सब मतलब होता है चेंज का, कि आप कुछ ऐड कर सकते हो, कुछ उसमें से निकाल सकते हो, राइट? कुछ अल्टर कर दो, कुछ वर्ड बदल दो, कुछ भी कर सकते हो. दैट इज द मीनिंग ऑफ अमेंडमेंट. नाउ क्वेश्चन है कि ये अमेंडमेंट शुरुआत कहां से होगी? लोकसभा से होगी या राज्यसभा से होगी? दैट इज कॉल्ड प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट. प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट. ये शुरुआत कहां से होगी? तो लेट मी टेल यू, amendment process can be initiated in either of the house, right? ये कहीं से भी शुरुआत हो सकती है, right? So if you look at the bill means draft proposal, right? Draft proposal intended to bring some changes in the law, right? Either addition or deletion or moderation or alteration, right? And that is called draft proposal. Consider you write 2 pages, 3 pages, 4 pages or 5 pages or 20 pages, and then you introduce the bill. That is basically draft proposal is a basically bill, right? And this bill can be introduced either by the government, right, or by the private member. Okay? Now if you look at in the parliament, there are two types of people. One is called the council of ministers. In the parliament there are two types of people. One is basically ministers, including prime ministers are the part of the council of ministers, and the rest members are called private member. Rest are called private members, whether they belong to the ruling party or the opposition party, it does not matter, right? चाहे वो बीजेपी से हो, चाहे वो बीजेपी से नहीं हो, राइट? वो आरजेडी से हो या कांग्रेस से हो, मैटर नहीं करता है, वो प्राइवेट मेंबर होगा, राइट? तो जो अगर बिल यहां से आता है तो उसको हम बोलते हैं गवर्नमेंट बिल और पब्लिक बिल, राइट? अगर बिल यहां से आता है, कोई प्राइवेट मेंबर इंट्रोड्यूस करता है, तो उसको बोलते हैं हम प्राइवेट मेंबर बिल. Clear? Right? Now look at so if you look at in the parliament, there are multi types of bill, right? Multiple bills.
One is called ordinary bill. Ordinary bill. Ordinary bill refers to, a bill related to ordinary matter like traffic, environment, marriage, property, industry, right? They are called ordinary bill, right? Now, second is called money bill. हाँ, नाम से ही पता चलता है money bill, right? मतलब it is related to money, related to tax, related to some money that India borrow from the IMF or any other institution, right? India borrows money now, right? So basically, money bill is, related to the tax, whether, abolition of tax or imposition of tax. There will be money bill, or the custody of the, borrowed money by the Indian government, okay, or any, fund we have, all are money bill. And the second is called financial bill. Third is called financial bill. Financial bill is also, related to the finance, but it is basically part of the revenue that we generate. Okay, right? And if you look at another is called constitutional amendment bill. Constitutional amendment bill. Right. The constitutional amendment bill seeks to amend the constitution. If you look at the constitutional amendment bill, it seeks to amend the constitution. What does it mean? It seeks to bring change in the constitution, either by addition, either by deletion, or alteration or moderation. What the idea? Now, if you look at this constitutional amendment bill, can be introduced either by the minister or the private member. Private member also can introduce. That is called private member bill, right? So if you look at this bill can be introduced either in the Lok Sabha or Rajya Sabha. कहां पर इंट्रोड्यूस होगा? चाहे लोकसभा में इंट्रोड्यूस होगा, चाहे राज्यसभा में इंट्रोड्यूस होगा, ठीक है? अब जब ये इंट्रोड्यूस होगा तो राइट, ये मेजॉरिटी से पास होगा। हो सकता है, देखो अलग अलग मेजॉरिटी होती है, एक होती है सिंपल मेजॉरिटी। कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे ऐसे प्रोविजन है जो सिंपल मेजॉरिटी से अमेंड किए जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपको नया स्टेट क्रिएट करना है, राइट, दो स्टेट को मर्ज करना है, सिटीजनशिप एक्ट में कुछ बदलाव लाना है, ठीक है, मैनर ऑफ द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में बदलाव लाना है, कोरम ऑफ द पार्लियामेंट में बदलाव लाना है, सेकेंड शेड्यूल में बदलाव लाना है, तो सिंपल मेजोरिटी से हो जाता है। हम लोग बातें करेंगे डिटेल में भी मेजोरिटी की। तो आप देखेंगे कि जो बिल इंट्रोड्यूस हुआ उसको एक मेजोरिटी से पास होना होगा। तो एक तो सिंपल मेजोरिटी से होता है, बट मान लीजिए कि आपको फंडामेंटल राइट में चेंज लाना होता है, तो हम स्पेशल मेजोरिटी से उसको पास होना पड़ता है। स्पेशल मेजोरिटी मीन्स द मेजोरिटी ऑफ द टोटल मेंबर ऑफ द हाउस and majority of the 2/3 members present and voting, ठीक है? अगर फंडामेंटल राइट में चेंज लाना है तो, अगर डीपीएसपी में चेंज लाना है तो ये स्पेशल मेजोरिटी यूज होती है। नहीं, अगर आपको फेडरल स्ट्रक्चर में चेंज लाना है, राइट, इफ द पार्लियामेंट सीक्स टू चेंज द फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, it means it must be passed by the special majority by the house, right, both the house, and then half of the states and more must ratify it by the simple majority. समझ में आया? यानी कि तीन तरह की मेजोरिटी हो गई। I'll discuss a bit later, right? So अगर जो भी है, तो अगर लोकसभा में इंट्रोड्यूस हुआ तो लोकसभा में पास हो जाएगा, उसके बाद कहां आएगा वो? राज्यसभा में।
right? So if it is passed in one house, it goes to the another house, right? So if it is passed in one house, the bill goes to another house. Another house, right? अच्छा, अगर एक बिल में चल एक एक हाउस में पास हो गया तो कहां चला जाएगा? दूसरे हाउस में चला जाएगा, ठीक है? The second house also passes the bill with same majority as per requirement, whether simple majority or the special majority, right? So the second house should pass the bill with same majority. As passed by the first house. फर्स्ट हाउस ने जिस मेजोरिटी से पास किया, उसी मेजोरिटी से सेकेंड हाउस को भी पास करना पड़ेगा, ऐसे नहीं चल सकता कम में, राइट? बट मान लो एक चीज कि इस हाउस ने पास नहीं किया, रिजेक्ट कर दिया. कंसीडर, लेट मी गिव यू एग्जांपल. द लोकसभा हैज इंट्रोड्यूस्ड द बिल फॉर द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. It has passed it and sent it to the Rajya Sabha, and Rajya Sabha has rejected the amendment bill, CAB, constitutional amendment bill. Now what would be the solution? Right, what would be the solution? Can it be joint sitting? Can joint sitting be held between both the houses? Now answer is no, right? If it is the ordinary bill, consider if it is ordinary bill, right? Ordinary means any bill which is related to ordinary matter, and let me tell you, the ordinary matter are more abundant, right? जो मनी बिल है वो तो है, ऑफ कोर्स इंपॉर्टेंट है, इट इज रिलेटेड टू मनी, राइट? बट उसका जो वॉल्यूम है, इट इज नॉट दैट मच एज ऑर्डिनरी मैटर वी हैव. लुक एट everyday matter we have, whether related to traffic or industry regulation or environment, right, or marriage related or abortion, any issue that is ordinary, matter, right? Whether education, right, all are ordinary matter. So if ordinary bill matter passes by one, ordinary bill is passes by one house and the other house rejected it, then there is a provision for joint sitting. The president will summon the house to go for the joint sitting, and joint sitting will take place, right? But mind it, when it is a cab, cab matlab constitutional amendment bill, and one house passes the cab but other house rejected it, it means no joint sitting can be held. Then what is the solution? The solution is that again the house initiate the same process from the beginning. Got idea? So but consider both the other house also passes it. ये तो हमने यहाँ पर ये किया था कि consider one house passes it, another house rejected it. But हम अब रिजेक्शन का कंडीशन नहीं लेते, हम कंडीशन ये लेते हैं कि consider one house passed the bill, another house also passed the bill, then where it goes? It goes to the president. It goes to the president. If both houses pass the cab, it goes to the president,
10 for, you know, assent. अब यहां पर प्रेसिडेंट के पास जाता है तो यहां पर भी एक ट्रिक है, राइट? यहां पर एक ट्रिक है, ये लिख लिया, इफ द बोथ हाउसेस पास द बिल, CAB, constitutional amendment bill, it goes to the president for assent. Now consider when it goes to the president, what happens? Now CAB has come to the president. The CAB has come to the president. Now, is it that president can return the CAB? Can president return the CAB? Let me tell you, before 1971, right, that means before 24th CAA, the president had power to return the constitutional amendment bill once to the parliament, right? And if the parliament again passes it, right, the president has to sign it, as in case of ordinary bill, right? If both the houses passes the bill and it goes to the president, president can return the bill to the house, right? Or the president can deny the bill. I'm not going to sign it. That is called absolute veto. That is called absolute veto. मैं नहीं साइन कर रहा हूं, ठीक है, राइट? जब रिटर्न कर देता है इसको बोलते हैं सस्पेंसिव वीटो, बट वो एक ही बार सस्पेंड कर सकता है, दूसरी बार नहीं कर सकता, राइट? ठीक है, तो क्या कैब के केस में कैन प्रेसिडेंट यूज दिस काइंड ऑफ पावर? नाउ लेट मी टेल यू, द प्रेसिडेंट कैन नॉट यूज दिस सच काइंड ऑफ पावर, right? The 24th Constitutional Amendment Act 1971 made it mandatory to the president that he or she has to sign on the constitutional amendment bill. So if you look at the 24th Constitutional Amendment Act has limited the power of the president regarding the constitutional amendment bill, right? Now look at, then parliament has more power to amend the constitution, right? Making sense? So what we have written, if the both houses passes the CAB, it goes to the president for assent, right? Now fifth stage you write, the president has to sign the CAB. The president has to sign the CAB, and it is mandatory for him. It is mandatory for him or her. What does it mean? When the constitutional amendment bill passes by the parliament and it goes to the president, it is mandatory for the president to sign it. वो कुछ नहीं कर सकता. The president can do anything. तो इसका मतलब क्या है? The parliament has more power. Look at the parliament. Parliament has power to amend the constitution, but can it amend anything in the constitution? Here you have, the basic structure doctrine, right, as proposed by the judiciary in Keshavanand Bharati case. And in the Keshavanand Bharati case, Supreme Court said that the parliament can use Article 368, right, and amend any part of the Indian constitution, including fundamental right and preamble, but it cannot change the basic structure. Now, what is the basic structure that judiciary has not defined in one go? However, there have been several judgment, right, through which Supreme Court has defined certain essential element of the constitution which cannot be damaged, cannot be destroyed by the parliament. For example, secularism, federalism, unity and integrity, the rule of law, right? So look at, the parliament can amend the constitution, but it cannot amend
the basic structure of the constitution as laid down by the judiciary in the Keshwanand Bharti case. Right? So one more you write, concluding line. Okay. Concluding the line you write. Okay. In sum, the parliament can amend the constitution by using Article 368. However, it cannot change the basic structure of the Indian constitution as laid down by the Supreme Court in Keshwanand Bharti case. Now one more line you can add. Likhe, there are several elements of the constitution like secularism, federalism, free and fair election, unity and integrity, rule of law, and others are the basic structure of the Indian constitution which cannot be changed by the parliament. So look at this is a procedure of amendment that I have discussed here. Now majority I talked about, majority for the amendment of the constitution, right? What kind of majority it requires? What kind of majority it requires for the amendment of the constitution? That is a simple question, right? Right. Now, as I told you, right, it requires three kinds of majority for the amending the constitution. It means to change the constitution, the parliament requires three kinds of majority. One is called simple majority. Simple majority. What do you mean by simple majority? Simple majority means 50% plus 1 present and voting. Present and voting. What does it mean? It means, मान लो कि parliament and it has two houses, right? The Lok Sabha and then Rajya Sabha. लास्ट में किसके पास जाता है? प्रेसिडेंट के पास, राइट? अच्छा, लोकसभा में स्ट्रेंथ कितना है? 543 अराउंड, राइट? एंड राज्यसभा में कितना है? 245 अराउंड, राइट? नाउ अब क्या है कि मान लीजिए कि लोकसभा का बिजनेस कब शुरू होगा? सब जाएगा तब. All 543 members should be present in order to initiate the business of the house. No. Then how many members you require? कितना परसेंट चाहिए? 500, 600, कितना? No, only 10%, Babu. Only 10%. That is called quorum. Have you heard about? That is called quorum. The minimum number, right? With the minimum number to be present in order to initiate the beginning of the house. So कितना चाहिए? 10%. That is called quorum. What is the quorum? The minimum numbers, present to initiate, the business of the house. कम से कम कितना मेंबर चाहिए हमें? 10% चाहिए. अच्छा, 10% कितना होगा इसका? 55 लोग होंगे, यही तो होगा, राइट? अच्छा, कोरम यहां पर भी सेम है. इसका कोरम कितना चाहिए? 10% कितना हो जाएगा? 25. आदमी को काटोगे तो नहीं आधे से, राइट? 25 चाहिए. अब देखिए कि मान लीजिए कि पार्लियामेंट में मात्र 55 लोग गए और यहां पर 25 लोग गए, राइट? अब इसका 50% प्लस 1 चाहिए. तो इसका 50% प्लस 1 कितना हो जाएगा? 28, 29, 28, 29. 29, ओके. और इसका कितना हो जाएगा प्लस 1 करके? 14. इतने पार्लियामेंटेरियन लोग जाकर के कॉन्स्टिट्यूशन को बदल सकते हैं. लुक एट कितना
29 लोग लोकसभा में चले जाएं और 14 लोग राज्यसभा में चले जाएं, संविधान को बदल सकते हैं। अच्छा, संविधान के कौन से प्रोविजन को बदल सकते हैं? दैट इज अ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि क्या ये संविधान के सारे प्रोविजन को बदल सकते? नहीं, राइट? नाउ लुक एट, बट येट बाय द सिंपल मेजोरिटी, you know, many provisions of the Indian Constitution can be changed, right? बहुत कुछ चेंज हो सकता है. For example, you know, creation of new state, right? Citizenship, right? See, यही कोरम को बदलना हो कि भाई कोरम कितना होना चाहिए, इतना ही चाहिए, right? Then, you know, quorum, ठीक है? Then if you look at second schedule, right? Second schedule, उसके बाद क्या? You know, the manners of election, manner of election of the president or the vice president, or you know, national election, कोई भी इलेक्शन हो उसका मैनर बदलना हो तो सिंपल मेजॉरिटी ही चाहिए, ठीक है? सिंपल मेजॉरिटी चाहिए उसको बदलने के लिए. मेकिंग सेंस? सो सिंपल मेजॉरिटी का क्या मतलब है? द 50% प्लस 1, ठीक है? प्रेजेंट एंड वोटिंग, ठीक है? तो और क्या क्या है? अच्छा, रूल्स और भी लिख लीजिए. EF, यूज ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज, use of official language, then delimitation of the constituency, delimitation of constituency, इसमें भी इतना ही लोग चाहिए, ठीक है? फिफ्थ शेड्यूल, राइट? फिफ्थ शेड्यूल, राइट? सिक्स शेड्यूल, सब में चाहिए सिंपल मेजॉरिटी. यूज ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज, delimitation of constituency. Delimitation means drawing and redrawing the boundaries of the Lok Sabha or the Vidhan Sabha. That is called delimitation, right? This is called simple majority. Got the idea? Simple majority. समझ में आया? Okay. जो दूसरा मेजॉरिटी है, that is called special majority. Right? अब ये स्पेशल मेजॉरिटी क्या है? What is this special majority all about? Right? A special majority means, you know, majority of total members of the house and not less than 2/3 present and voting. यानी कि, अच्छा बताओ क्या हुआ? मतलब फिर से पार्लियामेंट हमारे पास है एंड फिर से हमारे पास 543 है, लोकसभा में हमारे पास राज्यसभा में 245 मेंबर है. अच्छा, इसका मेजॉरिटी कितना हुआ टोटल? यानी 50% +1 होना चाहिए,
50% प्लस 1 कितना है? 243 का, 543 का, 272 राइट अराउंड। और फिर और कितना होना चाहिए? इससे कम नहीं होना चाहिए। 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग, जितना प्रेजेंट एंड वोटिंग होगा उसका 2/3 से भी कम नहीं होना चाहिए, राइट। तो ये है स्पेशल मेजोरिटी। अच्छा, कौन कौन सा चेंज हो जाता है, राइट? कौन कौन से प्रोविजंस चेंज हो जाते हैं इस मेथड से? देन फंडामेंटल राइट चेंज करने के लिए आपको ये चाहिए, डीपीएसपी करने के लिए ये चाहिए, प्रियम्बल में चेंज करना है तो आपको ये चाहिए, राइट। और एनी मेथड व्हिच इज नॉट डिस्कस्ड इन द एनी द बाय द सिंपल मेजॉरिटी, राइट। अब तीसरा क्या है? तीसरा है ये स्पेशल मेजॉरिटी प्लस ratification of more than half of the states. Special majority plus ratification of more than half of states by the simple majority. राइट अच्छा, इससे क्या होता है? कोई भी फेडरल स्ट्रक्चर बदलना हो, which provision can be requires this special majority. So to change federal structure, this majority is required. Right. So to bring change, to amend any federal elements of the constitution, you require the third kind of a special majority. What is that? That is basically the special majority and then plus the ratification by the more more than half of the states. वहां के लेजिस्लेचर से ratification चाहिए कि भाई ऐसा करना पड़ेगा. Making sense, everyone? Arya, Shreya, Shaumya, Yog. Yes, sir. All three majority that we discussed, the simple majority, the special majority, and the special majority plus the ratification of more than half of the states by simple majority. So state will do the simple majority. Now one question comes or should come to your mind, that consider the house passes it with the special majority and then it's sent to the house, to the states, that you also ratify it. Now how much time a state may take in order to pass the ratification, to give ratification? No, there is an unlimited time. The time is not discussed, right? The time is not mentioned in the constitution. Constitution is very much silent, right? So the state may take may do ratification immediately or may take unlimited time. The constitution is very much silent regarding the time it may take for the ratification. Got the idea? So just write note, एक नोट लिख लीजिए. देखिए, if the parliament passes constitutional amendment bill with a special majority, if the parliament passes the constitutional amendment bill with a special majority,
in order to bring changes, in order to bring change in the federal structure, in order to bring change in the federal structure, and directed the state to give ratification. Directed the state to give ratification. Directed the state to give ratification. Okay. The constitution is silent. The constitution is silent regarding time framework, within which the state may give ratification. The state may give ratification. Got the idea? It means there is no timeline, right? A state may give immediately, a state may not give immediately. Okay? Right? So these are the three majority system used in the parliament in order to change the constitution. But there are other majority. There are other types of majority system which is used in the parliament. So I would like to discuss that kind of majority. But that kind of majority is not used for the amendment to the constitution, right? Just for example, you have heard about absolute majority, right? Absolute majority we require for the formation of the government. For the formation of the government, yani 50% of the total plus one member you require to make the government. What the idea? Right? So let me talk about the majority system or majority which is used in the parliament, right? कौन-कौन से majority use होते हैं भाई, right? I'm going to explain you in very brief, right? And that will help you in solving, objective question, right? There are four types of majority, right? And fourth majority has again the four type of majority. ठीक है, तो इतने majority हैं, थोड़ा ध्यान से देखना है. Fine, ठीक है. Now first is simple majority. Simple majority. Simple majority means 50% plus one presented voting. And we have seen the constitution is amended by this majority. Simple majority. ठीक है. And second is basically, if you look at, ठीक है, called absolute majority. Absolute majority means 50% of the total strength plus one. ठीक है. Now this is absolute majority, and it is not used for the amendment of the constitution. It is used for the formation of the government. Consider a political party which contests election, right? It requires absolute majority in order to form the government. And if the party is unable to secure absolute majority, it means they will not
form the government until they don't have support, what we call coalition government. Coalition government means the political party gives support, right, in order to fulfill this condition, the 50% of the total plus one, right? Got the idea? Now this is also used, yeah, so when it is used, it is used for the formation of the गवर्नमेंट. कब यूज होता है? अभी बिहार में इलेक्शन हो रहा है, राइट? और जब इलेक्शन होगा तो क्या होगा? नाउ इफ यू लुक एट द अनदर, it is also used for the floor test in the parliament or the state assembly, right? It is used for floor test in the legislature or Lok Sabha. Now if you look at, you know that the idea of collective responsibility, right? The Lok Sabha is collectively, the government is collectively responsible to the Lok Sabha, right? अब जब कभी प्रेसिडेंट को लगे कि भाई इस पार्टी के पास तो मेजोरिटी है नहीं, प्रधानमंत्री बना पड़ा है, हाँ, तो उसको क्या करे? तो उसको बोलता है कि आप ऐसे करिए, यू गो फॉर द फ्लोर टेस्ट. इट मींस यू शो दैट यू हैव एब्सोल्यूट मेजोरिटी. आपके पास 50% प्लस 1 का स्ट्रेंथ है आपके साथ. इतने एमएलए और एमपी पार्लियामेंट के केस में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और असेंबली के केस में एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली. तो आप फ्लोर टेस्ट में जाइए, राइट? और फिर प्रधानमंत्री को इतने लोगों को 50% प्लस 1 लोगों को अपने साथ लाना पड़ता है टू शो दैट यस आई हैव कॉन्फिडेंस ऑफ द हाउस. व्हाट इज दैट कॉल्ड? अनदर नेम इज द कॉन्फिडेंस ऑफ द हाउस और कॉन्फिडेंस मोशन. इसका दूसरा नाम है कॉन्फिडेंस मोशन, कि भाई देखो मेरे पास कॉन्फिडेंस है हाउस का, मैं ऐसे प्रधानमंत्री नहीं हूं, हाँ, या मैं वैसा मुख्यमंत्री नहीं हूं, आई हैव, राइट? तो आप देखेंगे जो इलेक्शन होता है, राइट, बड़ा मजेदार कंट्री है हमारा. जब इलेक्शन होता है और पार्टी को इतना सीट नहीं मिलता है, थोड़ा 2-4 लेता है, तो दूसरा का लेकर के वो सीधा किसी कहां पर चला जाता है? बढ़िया होटल में जाकर के बैठ जाता है. तब तक वेट करता है जब तक गवर्नर उसको चिट्ठी ना दे दे कि आइए आपके पास मेजोरिटी है, ये करिए. आपने देखा है ये सब चीज होता है, राइट? फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र में देखा कि जो शिंदे थी उन्होंने फैक्शन क्या किया, उसको तोड़ लिया और तोड़ करके कहां चले गए? वो गुवाहाटी चले गए, असम चले गए, और वो सारे एमएलए वहां पर थे. उनको पता था कि हमारे पास जो बीजेपी है 120 के एमएलए हमारे पास है, शिंदे के 40 ऑलरेडी थे, बिल्कुल मस्त, राइट? और फिर गवर्नर का चिट्ठी का वो, मतलब गवर्नर के इनविटेशन का वो कर रहे थे कि भाई देखो हमारे पास इतना स्ट्रेंथ है कि मैं ये नंबर पूरा कर दूंगा. ये नंबर क्या है? 50% प्लस 1. ठीक, तो ऐसा ये गेम बहुत होता है फ्लोर टेस्ट का, राइट? सो ये दो मेजोरिटी है. नेक्स्ट मेजोरिटी जो है उसको बोलते हैं हम इफेक्टिव मेजोरिटी. दूसरे को, नेक्स्ट को क्या बोलते हैं हम? इफेक्टिव मेजोरिटी. ये तीसरा होगा ना, इफेक्टिव मेजोरिटी. अच्छा, इफेक्टिव मेजोरिटी क्या होता है बेसिकली, राइट? इफेक्टिव मेजोरिटी मींस टोटल स्ट्रेंथ माइनस वैकेंट, राइट? टोटल स्ट्रेंथ माइनस वैकेंट. अच्छा, वैकेंसी क्यों होती है? वैकेंसी अलग अलग कारणों से हो सकता है हाउस में. मान लीजिए कि अगेन आ जाइए पार्लियामेंट और लोकसभा, राज्यसभा
प्रेसिडेंट भी इसका इंटीग्रल पार्ट है, और 543 मेंबर्स जनरली होनी चाहिए लोकसभा में, राइट। बट मान लीजिए कि मर गए, कुछ 3 मर गए, तो कितना है टोटल, कितना है 540, 3 क्या हो गया, खत्म हो गए। उसके बाद बाई, उसके लिए बाई इलेक्शन होता है ना, राइट, उसी के लिए बाई इलेक्शन होता है। अच्छा, तो इसका बाई 2+1, तो इफेक्टिव मेजोरिटी होता है टोटल स्ट्रेंथ माइनस वैकेंट बाई 2+1। ये होता है क्या, इफेक्टिव मेजोरिटी। क्या होता है ये, इफेक्टिव मेजोरिटी। अच्छा, वैकेंसी केवल मरने से ही नहीं होती है, वैकेंसी वैसे भी होती है कि डिस्क्वालिफाइड हो गए मेंबर्स जो है पार्लियामेंट के, वो डिस्क्वालीफाई भी हो जाते हैं, राइट। द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट may be disqualified, right, and who is the supreme authority to decide whether qualification shall apply or not? The speaker, right. And speaker is the supreme authority within the Lok Sabha. Similarly, in the state assembly, the speaker is a authority in the assembly, right, to decide on the question of defection, ठीक है, और डिफेक्शन के मामले में डिस्क्वालिफिकेशन होती है। तो ये भी तरीका है ना, और भी कारण है वैकेंसी के, क्योंकि वैकेंट होता है, पता है, ये भी कारण है एक वैकेंसी के, कि अगर मेंबर ने 2 महीने तक प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स को इन्फॉर्म नहीं किया कि मैं कहां हूं, द प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैज अथॉरिटी टू डिस्क्वालीफाई द मेंबर ऑफ द हाउस। The presiding officer has authority to disqualify the member of the house if the member is unable to inform about his location for the consecutive 60 days. और भी कारण है, और भी कारण है। मान लीजिए आप इलेक्ट हो गए और इलेक्शन कमीशन को पूरा ब्यौरा नहीं दिया, उसमें भी फिर वैकेट हो जाएगी, again it will be, your seats will be vacant. So there are multiple reason for vacation. So what is total strength? वैकेशन और एब्सेंट को दिमाग में मत रखना, एब्सेंट अलग चीज होती है। एब्सेंटी मतलब वो मेंबर है लेकिन उस दिन नहीं आया है। एब्सेंट का मतलब क्या है कि क्लास में जो बच्चे आज नहीं आए वो एब्सेंट है, समझ में, ठीक है। सो व्हाट इज इफेक्टिव मेजोरिटी? अच्छा, इफेक्टिव मेजोरिटी यूज कहां होती है, राइट। इफेक्टिव मेजोरिटी होती है फॉर द रिमूवल ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट, right, the deputy chairperson of the Rajya Sabha, the speaker and deputy speaker of the Lok Sabha. तो कहां यूज होती है, देखिए, it is used for the removal of ex officio chairperson, of the Rajya Sabha, the speaker and deputy speaker of the Lok Sabha. Right? So we have already talked about 3 types of majority used in Indian Parliament. The simple majority, right? The absolute majority, the effective majority, and then fourth I'll talk about a special majority. समझ में आया ना, ये इफेक्टिव मेजोरिटी, टोटल स्ट्रेंथ माइनस वैकेंट, राइट। एब्सेंट मत कर देना, वैकेंट का अलग मतलब होता है, एब्सेंट का अलग मतलब होता है। एब्सेंट कहां पर यूज होता है, सिंपल मेजोरिटी में, है ना।
सिंपल मेजोरिटी क्या है, वही तो है, टोटल स्ट्रेंथ माइनस एब्सेंट, राइट, यानी प्रेजेंट एंड वोटिंग जो लिखते हैं वो इसी इसमें भी ऐसे भी लिख सकते हैं. So now come to the special majority, that is a fourth kind of majority used in Indian Parliament. स्पेशल मेजोरिटी. अब ये स्पेशल मेजोरिटी चार तरीके का होता है, ठीक है. देयर आर फोर टाइप्स ऑफ स्पेशल मेजोरिटी, राइट. अच्छा, दो टाइप ऑलरेडी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में यूज होता है. स्पेशल मेजोरिटी according to article 368, ठीक है, ये बताया ना, यूज किया हमने ऑलरेडी, राइट. दूसरा स्पेशल मेजोरिटी प्लस ratification of more than half of the states, राइट. ये दोनों हमने देख लिया था जब अमेंडमेंट की बात हुई थी, राइट. नो, जो थर्ड अमेंडमेंट होता है, राइट, राइट, स्पेशल मेजोरिटी अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 249. अच्छा, ये दोनों है आर्टिकल 368, दोनों है, ये दोनों 368 है. दो स्पेशल मेजोरिटी यूज होता है जो अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को यूज करने के लिए हम लोग करते हैं, राइट. ठीक है. नाउ अब ये क्या है आर्टिकल 249? आर्टिकल 249 है, राइट, द राज्यसभा कैन empower the parliament to make any law mentioned in the state list, राइट. आपको पता है कि जो सेवेंथ शेड्यूल है, पता है ना, सेवेंथ शेड्यूल में 3 लिस्ट हैं, बहुत सारी इंफॉर्मेशन है यहाँ पर इससे रिलेटेड, राइट. 3 लिस्ट है. अब एक लिस्ट को हम बोलते हैं यूनियन लिस्ट, राइट. दूसरे को हम बोलते हैं स्टेट लिस्ट, और तीसरे को हम बोलते हैं कॉन्करेंट लिस्ट, राइट. अब यूनियन लिस्ट में कितने आइटम्स हैं? अप्रोक्सीमेटली 98 आइटम्स हैं. कितने आइटम्स है मेंशन यहां पर? वो 98, जिसमें पार्लियामेंट लॉ बना सकता है. इन यूनियन लिस्ट देयर आर 98 सब्जेक्ट्स और आइटम्स, है ना. अब मान लो एक टोकरी है, उसमें है आलू, गोभी, भिंडी वगैरह जो भी है, ये उसी टाइप का एक टोकरी है. उस टोकरी में कितने आइटम रखे हुए? 98 आइटम्स. अच्छा, उस आइटम में हाथ डालने का किसका हक है? पार्लियामेंट का. स्टेट नहीं कर सकते उसमें, ठीक है. उसी तरह स्टेट लिस्ट है, राइट, और उसके पास भी एक टोकरी है जिसमें बहुत सारे आइटम्स हैं, राइट. उसमें अप्रोक्सीमेटली 47 आइटम्स, ठीक है. कितने आइटम है टोटल? 47 आइटम्स है, ठीक है. और उस 47 आइटम्स में कौन किसका हक है? स्टेट का हक, राइट. और कंकरेंट लिस्ट में अप्रोक्सीमेटली 52 है. नहीं, स्टेट लिस्ट में ना ज्यादा है, 66 61, शायद 61 होगा. कंकरेंट में कितना है दिखा रहा है? 47 दिखा रहा है ना. हाँ, राइट. यहां पर 66 था, 61 हो गया, ठीक है. स्टेट लिस्ट में कितना आइटम है? 61 है.
वहां पर किसका अथॉरिटी है लॉ बनाने का? किसका है? स्टेट का है, स्टेट लिस्ट है वो। और यहां पर 47 आइटम्स है, यहां पर कौन बना सकता है लॉ? यहां पर बना सकता है स्टेट और सेंटर दोनों। बोलो कुछ डाटा में अंतर है? So we can't see the screen or the screen share. या जस्ट वेट अ मिनट। उसमें जो दिखा रहा है ना मनन, बेसिकली 52 था, बट 42nd अमेंडमेंट एक्ट ने क्या कर दिया, 5 को हटा दिया, राइट। और 5 को इस इधर 5 जोड़ दिया, आप सही देख रहे हैं, ये शायद 52 हो गया, 5 जोड़ दिया 52 हो गया। अर्लियर 47 था, 5 जोड़ दिया, यहां 66 था, 61 हो गया। बिल्कुल अब सही है कि 47 था, 5 ऐड कर दिया, राइट। तो ये 52 है हमारे पास। अच्छा, तो ये अलग मैटर है, बट अब हम आर्टिकल 249 को समझते हैं। आर्टिकल 249 इज ए स्पेशल पावर ऑफ द Rajya Sabha. Now, if you look at the Rajya Sabha, what is the Rajya Sabha? Rajya Sabha is a federal chamber, right? If you look at the Rajya Sabha members, they are elected indirectly by the state legislature, right? अब ये लोग क्या करते हैं? They can pass a resolution by a special majority and can empower the parliament to make any law mentioned in the state list. अभी तक मैंने क्या कहा कि स्टेट लिस्ट के आइटम में कौन हाथ डाल सकता है? केवल स्टेट। बट अगर राज्यसभा चाहे तो पार्लियामेंट इधर भी हाथ डाल सकता है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट इधर भी हाथ डाल सकता है। द पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी आइटम्स मेंशन्ड इन द स्टेट लिस्ट, राइट। नाउ फॉर दैट amendment or that make law, what kind of majority that Rajya Sabha requires? So Rajya Sabha requires a special majority as per Article 249. Rajya Sabha requires a special majority as per Article 249, right? Now, if you look at Article 249, it says that, it says that a resolution should be passed not less than 2/3 of the total strength, right? A resolution should be passed a majority, right, not less than 2/3 of the total strength. Total strength, right? And yeah, 2/3 of the total strength. This is a majority that Rajya Sabha requires to pass a resolution. अब बोलो कि सर इतना बार बार रिजोल्यूशन का बात कह रहे हैं, व्हाट इज यू मीन बाय रिजोल्यूशन? रिजोल्यूशन मींस ओपिनियन। रिजोल्यूशन मतलब क्या होता है? ओपिनियन, राइट। तो राज्यसभा कैन पास अ रिजोल्यूशन by this special majority and can empower the parliament to amend the to make the law mentioned in the state list on any item. समझ में आया? क्लियर? Arya, Shreya, Shamya, Yog, making sense? The special majority according to Article 249. What is Article 249? Article 249 can be used by the Rajya Sabha. It can pass a special resolution and can empower the parliament, right, to touch or to make law on any item mentioned in the state list in order to pursue national interest.
इन ऑर्डर टू परस्यू नेशनल इंटरेस्ट। वैसे नहीं, नेशनल इंटरेस्ट के नाम पे हो सकता है। अरे एक एग्जांपल देता हूं, जीएसटी पता है आपको, जीएसटी राइट, जीएसटी राइट, जीएसटी पास होने से पहले ये रिजोल्यूशन पास हुआ था, क्योंकि आप जीएसटी के पहले जो हमारा टैक्स का जो नियम था, स्टेट का टैक्स अलग था और सेंटर का टैक्स अलग था, ठीक है। स्टेट लिस्ट में जो भी टैक्सेबल अमाउंट थे स्टेट टैक्स लगा सकते थे, यूनियन लिस्ट में जो भी टैक्सेबल आइटम थे उस पे यूनियन गवर्नमेंट टैक्स लगा सकते थे। अब टैक्स कैसे लगता है, अब तो यूनिफाइड टैक्स है ना। अब जब आप सामान खरीदेंगे तो देखेंगे कि भाई जो टैक्स है वो सीएससी जीएसटी भी जाती है, एसजीएसटी भी जाती है और इंटीग्रेटेड भी जाती है, ठीक है, ठीक है। तो जब पार्लियामेंट ने जीएसटी को पास किया, जीएसटी लॉ को अमेंड मतलब कुछ चेंज लाया जीएसटी के रिगार्डिंग, तो राज्यसभा को ये काम करना पड़ा, उसके बाद जीएसटी लाया गया, राइट। सो लुक एट हाउ स्पेशल मेजोरिटी इज यूज्ड, making sense everyone? Tell me, online students, the third Yes, sir. that we are talking about. Yes, sir. Could you please repeat? वो समझ में नहीं आया मेरे को। ये समझ में नहीं आया? इसे एक बार फिर से बता दीजिए ना, Yeah, बीच में कट गया था। definitely, definitely. Look, Article 249 is a special power of the Rajya Sabha, right? To pass a resolution. To pass a resolution. Resolution मतलब opinion of majority. Resolution मतलब क्या होता है? Opinion of the majority. Now, as I told you that there are 3 lists in such 7 schedule, right? The uni list, that is called list 1, right? And there are several items in the uni list. On each item, Parliament has exclusive power to make law. You have a state list, that is called list 2, right? And there are items in the state list on which state has exclusive power. Now, Parliament cannot make law on any item mentioned in the state list. The Parliament cannot make law, right, on a state list until or unless Rajya Sabha passes a resolution, right, by a special majority. What is that special majority? That special majority should not be the less than 2/3 of the total member of the house, right? Then the Parliament can touch the state list in order to serve the national interest. Otherwise, Parliament cannot touch, right? And you have concurrent list. You have concurrent list, right? Concurrent list, you have again item on which both, the center and the states can make law, right? But whenever there is a conflict between the central law and the state law, the central law shall prevail. जो सेंटर का लॉ होगा वो प्रिवेल करेगा, है ना? So if you look at Article 249, it is a special power of the Rajya Sabha. What is Rajya Sabha, right? Rajya Sabha is a federal chamber. Federal chamber means the member of the state, are the member of the Rajya Sabha. Look at the Rajya Sabha members. Rajya Sabha represents the interest of the states. Rajya Sabha represents the interest of the states at the union. Right? So look at the federal chamber. Federal chamber has special power, right? One is a special power this, and another is a special power Article 312. 312 means not a single all India services can be created without the permission of the Rajya Sabha. Do you know this fact? Not a single all India services can be created
by the permission of the Rajya Sabha, and that is the power of Article 312. Right? ठीक है? Right? So if you look at Article 249, Article 249 is a special power of the Rajya Sabha. It, when it passes a resolution and empowers the Lok Sabha, right, to make any law on any item in the state list, then Parliament can make law on any item mentioned in the state list. Otherwise, it cannot. Right? The example which I have given you, that GST. Right? The example I have given you, GST. Making sense now, Soumya? Yes, sir. पक्का ना? ऐसे तो नहीं बोल रहे yes sir? पक्का समझ में आया? Yes, I have written down. Understood. Yeah. So this is the third kind of a special majority. Right? The three special majority we have already done. Now, if you look at the fourth special majority according to Article 61. A special majority according to Article 61. A special majority according to Article 61. Right? Okay. If you look at right, what is a special majority according to Article 61? Right. Just give me. I have mobile. हाँ. ये special majority इसमें मैंने थोड़ा सा let me see Article 249. मुझे लगता है Article 249. थोड़ा सा I need to recorrect myself. It's not 2/3 of the total member. जो मैंने कहा था 2/3 of the total member present in voting है. ये जो मैंने कहा था 2/3 ना, not by 2/3 of the total strength, total members present in voting. Present and voting. ये थोड़ा सा या रिकरेक्ट कर लीजिए. होता है कभी कभी या you miss from your mind, right? क्योंकि इतने सारे हैं ना, right? So total not less than 2/3 of the members present and voting, right? That is a special majority. यहाँ पर है जब मैंने यहाँ देखा ना, मैंने कहा यार क्या गड़बड़ हो रहा है यार. यहाँ पर जो for impeachment of the president, the both houses should pass a special resolution. Now that special resolution should be passed not less than 2/3 of the total member. Right? So look at, to impeach president, right? The house should pass, or each house should pass a resolution, right, by a majority not less than 2/3 of the total strength. Total strength of the house. ठीक है. तो 249 में क्या था? Not less than 2/3 present and voting. Right? यहां पर क्या है? Not less than 2/3 total strength of the house. Right? So this is the fourth
special majority that parliament uses. Look at, I think 4 यहाँ पर और 3 ऊपर. 7 special, majority system is used in the parliament. Okay? For different occasion. For the changing of the constitution, there are only 3. Rest for the different purposes.